Namaste. Welcome to today's video. Today we will understand the mechanism of mind or the thought. What is the feature of thought and how we can improve it to positive thinking, because most of us are into negative thinking. So we understand how yoga can be applied for positive thinking and how we can empower ourselves and our mind. तो चलिए समझते हैं आज पावर ऑफ माइंड, थॉट एंड पॉजिटिव थिंकिंग एंड कैसे हम योग को उसमें जोड़ सकते हैं, कि हम उसे कैसे सीख सकते हैं एंड कैसे उसे अप्लाई कर सकते हैं फॉर बेटर मेंटल पावर. So first of all, we have to understand how our mind works. You have to understand that a personality is essentially made out of what a person thinks. Because for any action, there is a mind, there is a thought, and the thought will create action, and that will create a habit, and that habit creates a person's destiny or how their character will be. And because of that, we say we become what we think. So it is important for us to understand that our thoughts are under our control or are positive or are beneficial to us, right? So what is mind? Mind is essentially thought. If there is no thought, there will be no mind, right? So this is how it is connected. दिमाग या माइंड या चित्त या मन को ही एक थॉट के रूप में देखा गया है. अगर सोच बंद हो जाती है, हम सोचना बंद कर देते हैं, तो हमें पता है कि एग्जिस्टेंस ही नहीं है माइंड का, अगर हम उस लेवल पे देखें, राइट? तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि अगर हमें कोई भी चीज अगर करनी है, कोई भी चीज अगर हमारी लाइफ में हो रही है, इट इज ओनली बिकॉज हम कैसे सोच रहे हैं वैसे ही अट्रैक्ट हो रहा है. तो अगर हम ऐसे देखें कि अगर कोई भी चीज हो रही है और अगर हम उससे परेशान हैं, उसका जो हमारा रिएक्शन है वो भी एक ही सिमिलर टाइप का लाइफ क्रिएट करता है, व्हिच इज व्हाई हमारे को पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए. So the first thing that is most important for us to understand other than this is the feature of mind or thought, which is that the thought is immediate. Thoughts have frequency and that one thought creates another thought. Of course, there are many other rules and other features, but these are few very important ones to understand. So let's go into it. So थॉट की लाइटनिंग फास्ट स्पीड है, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा है. थॉट इमीडिएट होता है एंड इसी वजह से वो बहुत फास्ट भी होता है, क्योंकि वो उसी समय आता है एंड उसी समय क्रिएट होकर डिस्ट्रप्ट होता है. तो आप देखेंगे कि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है. लाइक इफ यू वांट टू जस्ट सिट एंड यू जस्ट वांट टू ऑब्जर्व योर माइंड और योर थॉट, यू विल रियलाइज दैट you have spontaneous thoughts. There are so many so many things that are going on in your head, and the pace of thought is so fast. Like you have such a high fast pace of thought, or the frequency is so high. Now if you have to control it, if you have to see or you have to choose, you have to slow it down, which is where yoga comes into play. And it also tells us that a good where we have to talk about positive thinking, it needs more energy. More prana and good prana is important for positive thought, for good energy, which is why again yoga comes into play, where हमारे जो 5 points of yoga हैं, we can see how all those 5 points can be applied, and we can see how we can actually increase our prana and also help us think positively, या फिर हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने माइंड को, अपने थॉट को, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट द 5 points of yoga that we had discussed very early in the whole sequence, जो सबसे पहले होता है हमारा आसन. So when we talk about asan, it actually helps us focus better and controls our mental activity. It kind of also increases the prana, or kind of moves the prana to higher centers. And when we talk about pranayam, so the movement of the prana that must have happened through asana will be rejuvenated. So the new energy or new prana actually is inculcated. We take in more new prana through pranayam. That happens. Then relaxation, of course,
is how we kind of calm down, and we elevate the prana, or kind of redistribute the prana that is there. We kind of rejuvenate or so it's kind of a reuptake and reorganize the whole process, which is why relaxation is important. And then of course we have positive thinking and meditation, which focuses our energy, and it can actually increase the whole energy, the prana, wherever we are focusing it into, right? And then we also have proper diet, which is like something like vegetarian that we say, which also vitalizes the whole energy. The whole prana system is getting the right kind of support, the right kind of diet, and the right kind of energy for the upliftment of the movement of the right prana that we have now introduced. So like that, if we see, thoughts are wavelengths, thoughts are frequency, and what kind of frequency, what kind of wavelength we tap into is the kind of reality we will bring for ourselves. So we can always change the frequency, we can always change the wavelength, and we can see the difference for ourselves. तो यहीं आप देख सकेंगे कैसे योग का आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन या ध्यान, आपका जो खाना, सात्विक डाइट है, और आपके जो ये पूरा ही सिस्टम है मेडिटेशन का और प्राणायाम का, रिलैक्सेशन का, इन सभी चीजों से हमारे जो है प्राण, जो है नया प्राण आता है, पुराना प्राण जाता है, रिलीज होता है पुराना प्राण, और जो नया प्राण आता है उसको रीडिस्ट्रीब्यूशन का मौका मिलता है, उसको रेस्ट, रिलैक्सेशन का मौका मिलता है। इसी वजह से जो हमारे 5 पॉइंट्स है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। इसी में हम ये भी देखेंगे कि अगर हम थॉट की बात करें कि वो कितना इमीडिएट है, कितना फास्ट है, तो हमें उसे स्लो डाउन करना होता है। बट अगर हमें पॉजिटिव एनर्जी चाहिए होती है, अगर हमें पॉजिटिव प्राण चाहिए होता है, अगर हमें पॉजिटिव थॉट चाहिए होता है, तो हमें प्राणा एनर्जी जो है वो इंक्रीज करनी होगी। विच इज वाई कहा जाता है कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी जैसी होगी, आपकी वेवलेंथ जैसी होगी, वैसे ही अट्रैक्ट कर सकते हैं आप जो आप चाहते हैं। दिस इज वेयर द कॉन्सेप्ट एक्चुअली कम्स फ्रॉम। So if you think about it, the statistics say that we as a human, the mind thinks about 12,000 to 6,000 thoughts or even more a day, of which about 80 to 90% are repetitive, and we have about majority of them, 90% of them, as negative thoughts, which is so not nice, right? Like of course, if you know that you have so much of clutter, which is all negative and which is all repetitive, there will be no growth. So we need to shift gears and we need to change whatever the narrative is, and here we have to deal with positive thinking. So how do you do positive thinking? तो उसके लिए एक और बहुत important चीज जाननी हमारे लिए जरूरत है, अगेन एज अ फीचर ऑफ माइंड और द थॉट, दैट वन थॉट क्रिएट्स अनदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इम्पोर्टेंट कि जैसे ही हमें ये पता चले, सबसे पहले तो हमें ये दिख जाना चाहिए कि वी आर थिंकिंग, वी आर इन अ लूप, एंड वी शुड बी एबल टू बी विजिलेंट अबाउट इट, दैट वी डोंट वांट टू गेट इनटू द लूप। तो उसके लिए हमें देखना चाहिए कि हाँ, अभी हम कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, एंड इमिडिएटली उसको रोकना जरूरी है, या फिर उसकी अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। एंड जब आप देख पाते हैं, फिर हम आगे उसके बढ़ पाएंगे। सो द फैक्ट दैट वन थॉट क्रिएट्स अनदर, it is about the fact that wherever you are, the environment matters. So if you are in a place with a lot of negative energies, with a lot of negative people who have very similar kind of thought process, which is fear, doubt. For example, you go to a city where there is a lot of financial struggle, and then you will have a lot of fear, you will have a lot of doubt, you have so much of chaos, right? So in such cases, it is important for us to know that environments do matter, and for such a case, it is important for you to know that you will have to go to a place which is calmer, peaceful, and supportive for your mental health. Here it is also important what kind of people you are surrounded with, what kind of things you consume. Now, consumption is not just food, but media, internet, news, all obviously the kind of conversations we are having with people. All of this is what we consume. अगर इसमें से कुछ भी हमारा नेगेटिव है या लो एनर्जी में जो है, तो वही हम
उसी को हम प्रोपगेट करते हैं. Which is why it is important for us to know that if we want to be in a positive state, we should have an environment that is friendly, positive, or supportive to you. There is satsang, there is a community or people around you who are positive. तो अगर आपको ये दिख पा रहा है कि आप अगर किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे बहुत डर, डाउट, मैनिपुलेशन और दुख का वातावरण है, अगर ऐसा कुछ है तो फिर आपको उसकी उल्टी जगह जो आपको शांति दे सके, जहाँ पे लोग अच्छे हों, जो आपको सत्संग जैसा लगे, जहाँ पे प्यार और खुशी आपको दिख सके, जहाँ पे पीस हो, तो आपको ऐसे सात्विक एनवायरनमेंट में रहना चाहिए अगर आपको पॉजिटिव जो है इम्प्रूवमेंट लाना है. एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ वन ऑफ द थिंग्स दैट वी कैन डू फॉर द पॉजिटिव अपलिफ्टमेंट ऑफ अ माइंड एंड थॉट. Other thing obviously is to be able to be vigilant about it, and then you have to change the thought whenever it comes. It should be immediate because the thought is also immediate. और अगर आप उसको prolong करते हैं तो वो और serious हो जाएगा because वो एक repetitive pattern होता है and वो और strong हो सकता है. Now if we talk about how yoga, all the 4 paths or the 4 types of yoga can help you in changing the path, then I am here to tell you that also. अगर आप कर्म योगी हैं, if you do कर्म yoga, then the underlying concept is that of I am not the doer and there is no attachment to the action. So here is where you can actually even dissociate from anything that may even be like negative or positive. So if there is any repercussion, if there is any result which is negative, you will be able to see that you are not the doer, and you will be able to detach yourself from the result. You will be able to detach yourself from the environment and everything. तो अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि कर्म योग के लिए अकर्ता भाव जो है, तो वो अकर्ता भाव से कभी भी अटैचमेंट नहीं रखेगा रिजल्ट की या किसी भी कर्म से. तो उसके लिए फिर उसको उससे जो भी मिल रहा है उससे उसको कोई दिक्कत नहीं होगी. तो जब कोई अटैचमेंट नहीं है तो उसमें फिर उनको आसानी हो जाती है कुछ भी कर्म करने में. यहीं पे भक्ति योग के बारे में बात करें तो भक्ति में सिर्फ सरेंडर और भगवान की इच्छा ही देखी जाती है. तो उसमें कुछ अच्छा या बुरा इसलिए नहीं लगता क्योंकि उसमें सभी कुछ भगवान की इच्छा है. सो इफ यू थिंक अबाउट भक्ति योग, एवरीथिंग द भक्ति योगी हैज सरेंडर्ड टू द गॉड एंड एवरीथिंग इज सरेंडर्ड. सो एवरीथिंग विल बी गॉड्स विल इफ नॉट one one's will. In Jnana Yoga, we talk about that I am the silent witness all time. So here also you are not the experiencer. You are not really experiencing the bad or the good. You're not into the loop of negative thoughts because you're already free. You're already in a state of freedom. So here you will be able to see that you do not have any attachment or you do not have any experience that you think you are connected with. So अगर आप ज्ञान योग के पाथ में है तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आप तो सिर्फ एक साक्षी भाव से सब चीज सिर्फ देख रहे हैं, एक साइलेंट विटनेस है और आप करता तो है ही नहीं पर आप भोगता भी नहीं है, अभोक्ता अकर्ता. तो फिर आप वैसे भी फ्री हो जाते हैं. जब आप फ्री हो जाते हैं तो आपको किसी चीज से अटैचमेंट या किसी चीज की डिजायर नहीं है तो आप वहां से भी फ्री हो सकते हैं. यहीं पे अगर हम राजयोग की बात करें तो राजयोग में अलग अलग तरीके हैं. जैसे आप पहले तो अपने थॉट को चेंज कर सकते हैं. अगर आप देख पा रहे हैं तो फिर आप उसमें न्यूट्रल स्पेस में जा सकते हैं. आप सिर्फ अवेयर रह सकते हैं एंड उससे अटैच ना हो, आप ये भी कर सकते हैं. यहीं पे आप उसके अलग तरीके ले सकते हैं जिसमें आपको जो भी आपका नेगेटिव थॉट है आप उसको चैनलाइज भी कर सकते हैं, जिससे हमने अलग अलग तरीके बताए. या फिर आप पॉजिटिव एफर्मेशन दे सकते हैं, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन कर सकते हैं. अगर कोई भी नेगेटिव थॉट आ रहा है तो आप उसी ही सिचुएशन की पॉजिटिव चीजों में देखकर उसमें ग्रैटिट्यूड देके आप अच्छी चीज को और एम्पलीफाई कर सकते हैं. तो ये अलग अलग तरीके हैं. उसके अलावा जैसे अभी हमने सत्संग की बात की, हमने इस बारे में बात की कि अगर हम सही स्पेस में आ सकते हैं, अगर हम अवेयर रह सकते हैं तो हम गलत और सही या फिर पॉजिटिव नेगेटिव में हम अपने थॉट्स को चूज कर पाएंगे. और वहां पे जब हम चूज कर पाते हैं वहां पे हमारे पास पावर होता है और वहां पे हम बदल सकते हैं. तो इसी तरीके से इन राजयोग वी कैन एक्चुअली चूज टू चैनलाइज our negative thoughts. You can let them go, you can let them pass, knowing coming in the space of awareness, or you can even change one thought at a time by changing it into positive
or as you would wish for that moment to be. Or else you can simply see the positive side of the whole situation or the thing that you might be in. Or you can also do positive affirmations. You can also do positive visualization to be able to change anything that is negative and not serving you. And obviously good company and coming in this space of awareness is definitely a few of the very powerful techniques. Again, when we talk about positive thinking, it is important for you to understand the nature and the frequency of thought, because that is equally powerful. And so by frequency I mean the repetition, how frequently those thoughts are coming. It is important for you to know that also. So coming in the space of awareness to know that such thoughts are being repeated is one important. Second, to know the nature. For example, anger is hot. It comes from unfulfilled desires. And so if you're able to detach yourself from the desire, or you're able to lessen down your expectation, that will be very helpful. In addition to that, for example, fear brings cold. Fear is associated with cold. And so if you're attached, so here comes the attachment, and there again is strong attachment of wanting something, and the fact that you would want something, if you are not free of it, you will have fear. And the moment you cut it off, you let the attachment go, you will be free, and you will also not be having any fear. So all of those things are very practical tips, very practical ways, and I hope that can help you actually bring into play how you can use these yogic lifestyle methods, and also some really important practical tips to help yourself be more positive, more effective, and attract good energies and increase your prana in your life. So hope to see you in another video. Thank you so much.